सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। So the first point is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equal to 0 and abc belongs to real number is called the quadratic equation. तो कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है, जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इस इक्वेशन को एक्स में क्वाड्रेटिक कहते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, वो वाई में क्वाड्रेटिक होता। सेम कंडीशंस दी हैं सारे इक्वेशंस में। ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी जीरो होता, जेड में क्वाड्रेटिक होता। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज वैल्यूज ऑफ एक्स के वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं आर कॉल्ड इट्स रूट्स। तो x के वो वैल्यूज जिनको इस इक्वेशन में डालने पर ये जीरो आ जाएगा, तो वो इसके रूट्स कहलाते हैं। रूट्स ऑफ दिस आर गिवन बाय लेट अस से अल्फा बीटा। हमने मान लिया कि रूट्स यहाँ पर अल्फा बीटा है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट डी भी बोलते हैं। तो अल्फा के वैल्यूज आ जाएंगे ये वाला वैल्यू, या माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये भी हो सकता है। बीटा को सिमिलरली लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए क्योंकि इससे रूट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है। वो कैसे? डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं, डी जीरो है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और डी लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कॉमन सी बात है, यहाँ पे अगर आप डी को जीरो रख देंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, माइनस बी बाई 2 है। पॉजिटिव होगा डी तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो रूट का के अंदर नेगेटिव वो रियल नंबर हो नहीं सकता, तो इमेजिनरी आएगी। तो ये इसी की एनालिसिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहीं से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ बी बाई आ जाएगा, जिसको हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं। जबकि दोनों का आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो वहां से सी बाई आ जाएगा, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y is ax square plus bx plus c is a parabola. Parabolic graph होता है। There are many possibilities, but if we assume that ax square plus bx plus c is equal to 0 has real and distinct roots, तो कुछ ऐसा आएगा, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। So this is one of the possible graph of the polynomial y is equals to ax square plus bx plus c. Now there is analysis regarding this polynomial that if y is ax square plus bx plus c, then if a is positive, then minimum value of y is 4ac minus b square by 4a, and maximum value tends to infinity when x tends to plus infinity or minus infinity. This can be analyzed from this equation. When x will tend to infinity, so x square term will dominate. So we can say that if a is positive, which we have assumed over here, so you take x as infinity or minus infinity, both will tend to infinity, and hence y will tend to infinity for the maximum value. Now next case is when a is negative. So when a is negative, so obviously y has got a maximum value, which is 4ac minus b square by 4a, and y minimum will tend to minus infinity because a here is negative. So x square term will dominate and x square tends to infinity, so ax square will tend to minus infinity. So these are the possibilities. Now let's solve a question based on that. Suppose we are being given x square minus 3x plus 2 is equal to 0. We need to find ABC as per the standard equation, ax square plus bx plus c, then discriminant alpha beta, alpha plus beta, alpha minus beta, alpha beta, d, number, nature of roots, y max, y minimum graph, at x tends to infinity, y is equals to what? This is what we need to conclude. So if we compare this equation ax square plus bx plus c 0 with this one, we can say that a equals to 1 corresponds to 1, b corresponds to minus 3, and c corresponds to 2. It should be noted over here that there are infinite possible values of ABC, out of which these are just one value which I have discussed. Because if there are common factors in ABC, they can be cancelled out from both the sides. Suppose I take A as 2, B as minus 6, and C as 4, or any multiple. Suppose I take A as lambda, B as minus 3 lambda, and C as 2 lambda. So also then this equation can be valid. But these are the one possible values of A, B, and C. This is the brainstorming question in this. So this is the first question. Next is we need to find the D, which is b square minus 4ac. So if we calculate it over here, it comes out to be 1. Then alpha is minus b plus root d by 2a.
So on solving this, we get 2 and another value as 1. Sum of roots alpha plus beta is 3, alpha beta is 2 into 1, 2, alpha minus beta is 2 minus 1, which is 1.